Yes, students. Our today's topic is triangle, and basically we have already done the concept of triangle, but let's recall. So it is a three-sided polygon because it is made up of entire line segments, and I am naming this A, B, and C. So the triangle has three vertices. 1, 2, 3 vertex. Vertex means जहाँ आपकी two lines meet होगी. तो vertex A, vertex B and vertex C. Now edges. What is edges? The lines AB, BC and C. These are the sides of a triangle and edges of a triangle. So you can say that it is a side and edges also. Now, three angles. Name three angles of a triangle. Triangle has three angles. First one is angle A, angle C, angle B. तो हम angles के लिए लिख देते हैं angle A, angle B and angle C. Now, triangle can be classified on the basis of their sides and on the basis of their angles. So, on the basis of their sides. On the basis of their sides, triangle can be classified into three categories. First one is equilateral. First one is equilateral. Equilateral means all sides are equal. Equilateral means all sides are equal. जिसकी हमारी सारी sides equal होती हैं. Next one is isosceles. Isosceles means two sides are equal. जिसकी two sides equal होती हैं. Isosceles means जिसकी two sides equal होती हैं. And next one is scalene triangle. All sides are different. Shape of this triangle is like this. All the three sides are unequal. Two sides are equal like this. And in this, all the three sides are equal. So, triangle can be classified in three categories. Like first one is scalene, isosceles and equilateral. I am zooming my camera. You can note down the properties also. Scalene triangle, all sides are different. Isosceles, all sides are equal. Equilateral, all sides are equal. So, जिसकी three sides equal होंगी equilateral, जिसकी two sides equal होंगी isosceles and जिसकी all side different होंगी वो scalene. Now, the triangle can be classified on the basis of their angle. On the basis of their angle, triangle can be classified into three categories. Acute angled triangle. Acute angle triangle. Acute angle triangle का मतलब हुआ that means हमारे जो triangle के acute angles होंगे, like आप कह सकते हो all the angle is less than 90 degrees. Less than 90 degrees.
लाइक आप इस ट्रायंगल को जब बनाओगे तो दीज आर द एक्यूट एंगल्स, ऑल द एंगल्स आर एक्यूट. नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल. It's mean you have to draw one right angle and others are acute angle because one right angle ही possible है. तो जब हमारा right angle triangle होता है उसमें सिर्फ one angle 90 का होता है, other two are acute. जो remaining two angles है वो acute angles होते हैं, वो right angle नहीं हो सकते हैं. Now the next one is obtuse angle triangle. In which one angle is obtuse and other two are acute. सेम प्रोसीजर, लाइक अगर ये हमारा 120 डिग्री का एंगल है तो रिमेनिंग टू जो होंगे वो हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे. सो वी हैव डन एंगल कैन बी, ट्रायंगल्स को हमने एंगल के बिहाफ पे भी जज किया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑल द एंगल्स आर एक्यूट. राइट एंगल में हमारे पास वन राइट एंगल होगा एंड ऑब्ट्यूज एंगल में हमारे पास वन ऑब्ट्यूज एंगल होगा. सो यहाँ पर हमारे ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाती है. यू कैन सी आई होप यू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रायंगल नाउ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.